So next is prepositions of time. So बर्तमान देखिबा टाइम रो preposition गुडा को कौन अच्छे. So no doubt आगुर मुझे जमीती कही सारी प्लेस रो preposition ठू अल्प संख्यक होउची कोन prepositions of time. Like पांचटा बेले, पांचटा सुधा, पांचटा भितरे, तीनिटारू चारिटा भितरे, यही शब्द गुड़ाक यही अव्यय पद गुड़ाक बा यही प्रेपोजिशंस गुड़ाक आम यूज करूँ समय को सूचेबा पाई. लेट्स सी. सो व्हाट आर दिस? एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, बाय, फ्रॉम. ओके ओके जस्ट अ मिनिट. एई थ्रू बेसिक फंडामेंटल क्लास रे आम केते गुडे आलोचना करि सारिचे. कौन से वर्ड गुड़ाक मुझे कहूँ शुण. सिंस आउ फ्रॉम, सिंस आउ फ्रॉम एटा आम आलोचना करी सारीचे. केमिति? लाइक सिंस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अतीत रे गोटे काम आरंभ हैला आ से काम जदि ए पर्यंत चालू अच्छी आमे सेठी सिंस लगो. से गोटे गोटे प्रडक्ट उपर लिखाई थाए सिंस 1965. बहुत मसला पैकेट उपर पिले मैं तुम कथाटा बहुत गुड़ा आइटम उपर देखिथिबो लिखाई थिबो. ओके. किंतु फ्रॉम टा कोन ना फ्रॉम होउची स्टार्टिंग पॉइंट आउ एंडिंग पॉइंट जोठी गिवन थाए. अतीत रे हो कि भविष्यत रे हो सेठी हमें फ्रॉम यूज करिबा. ठीक सेमिति टिल आउ अनटिल रो कथा अछि. टिल आउ अनटिल रो कथा तो मुझे पे कही टिलटा हूँ इनफॉर्माल आउ अनटिलटा हूँ कौन फॉर्माल बा भारी गोटे फॉर्माल गोटे एकदम जो आम ऑफिशियल वे रे भारी मार्जित वे रे आम कौन यूज करवा अनटिल को यूज करवा टिल को यूज करवानी. सबू शब्दर पिले निजस्व किसी तुम देख टिल थिला ना ये क्वेश्चन आसो ना अनटिल आउ एक्सट्रा कामटा सार कौन करुच्ची टिल तो काम चलई दे था. आर्ट को आम ये टिके आगु पढ़ी सारी एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आर्ट विथ अ मेंटालिटी ऑफ यूजिंग दिस एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हिसाब रे आर्ट को आम केमिति यूज करि परिबा. इट इज यूज्ड विथ एन एक्जाक्ट पॉइंट. सेति पई पिले मु जतले ट्रायंगल टा बनैथिली कहिथिल ना गोटे एक्जाक्ट टाइम हेले आम कोन करिबा एटा शार्पर. दिस इज वाइडर, दिस इज मोस्ट वाइडर. सो इट इज यूज्ड विथ एक्जाक्ट पॉइंट ऑफ टाइम. ओडिया आम कहू 3टा बेले 3टा 20 रे ना सैटेलाइट केते लॉन्च कला ना 3टा बाजी 25 मिनिट रे. जो समयटा स्पेसिफिक निर्दिष्ट से आर्ट यूज करूँ. ही अराइव्ड हियर एट 3 o'clock, at 10:30, at midday, at midnight, at dawn, at daybreak, at sunrise, at sunset, at dusk, at the weekend, at the weekend. प्लेटी मजा कथा देख at the weekend. weekend कौन सप्ताहांत शनिवारटा गोटाए दिन हेले भी आम आर्ट यूज करछे. देख at the weekend which is correct. at Christmas, at Easter, at Holi, at Diwali, at the New Year. मु टिके आगुरु कहिथिली जदि 24 घंटार कथा हुए सेठी ऑन यूज करिबा किंतु आर्ट भी यूज करि परिबा कारण ए सब गुडाक गोटे गोटे स्पेशल डे. ही इज इन बेड एट दिस मोमेंट. वर्तमान समय रे देख एठी मध्ये आर्ट लागिची वेरी स्पेसिफिक राइट नाउ कोठी जे देख सजर सोईची. सो ही इज एट बेड एट दिस मोमेंट. ही वाज इन बेड एट दैट मोमेंट. अति जोठी स्पेसिफिक निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट जगह आ निर्दिष्ट कथा निर्दिष्टता पाई आमे आर्ट को यूज करूँ. एबे इन ए जो ट्रायंगलटा करी ट्रायंगल रे पिले मु लिखि देइथिली ना इन समर, इन लास्ट वीक, इन 90s 19 शताब्दी रे 1900 मसीहा 19 शताब्दी रे यही गुड़ाक आम इन यूज करवा. तेणु खाली सेंटेंस पढ़ी दूसरी देख लिखला इट इज यूज्ड विथ सीजन्स जहाँ लिखी इन समर, years and parts of months and days. Like he came here in winter, शीत दिने से आसीथिला. In summer, in 2005, in January, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the twilight, in the night.
but at night. Okay, so American English आउ British English रे पिले in the night आउ at the night ए दीटा जिनस यूज करा जाए, किंतु आमे प्राय तो यूज करू कोन at night. Then it is used with future time to show the period at the end of which some action will happen. केमिति? It is used with the future time to show the period at the end of which an action will happen. गोटे एमिति पीरियड को से सूचाए जहार शेष रे आउ गोटे काम आरंभ हम. धरी नियो एबे एग्जाम चली, ठीक एग्जाम सरिले कौन हम पिला खाता कलेक्ट करा जीवो से कथाटा. दिस प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड इन 6 months टाइम. 6 मासर समय पर 6 मास पर कौन हम प्रोजेक्टा सरी जीवो. ही विल अराइव इन 10 minutes. ही विल अराइव इन 10 minutes. तुम जदि ये कहब ही विल अराइव आफ्टर 10 minutes, जेनेराली पिला साइकोलोजी एमती थाए से माने ये आफ्टर लगे दियंती. नो, इन 10 minutes. It is used to show a period of time. Okay, it is used to show a period of time. Then like it was done in a day. एटा को गोटे दिन रे करा जाई थिला, गोटे दिन रे. तेणु इन कौन यूज कला एटी पीरियड ऑफ टाइम केते समय गोटे दिन रे 5 वर्ष रे कि 60 दशक रे. ये समय सीमा को सूचाए इन. इट हैपेंड इन माय चाइल्डहुड. मो पिला बेले ये घटना घटिला. पिला बेलटार कौन निर्दिष्ट समय सीमा अच्छी कि पिला बेल लेट इट बी 5 वर्ष 10 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जार पिला बेल जी दिन भी. सो इट हैपेंड इन माय चाइल्डहुड, इन माय स्कूल डेज, इन माय यूथ, इन माय ओल्ड एज. सो गोटे इट इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम. एबे देखिबा ऑन. ऑन ऑलरेडी मु कही सारी से कथाटा आउ कहूनी. केमिति देख गोटे स्पेसिफिक डे कथा कही देथिल ना, लिखितली ऑन मंडे. पढ़ी दउची खाली देख. इट इज यूज्ड विथ अ स्पेसिफिक डेट्स एंड डेज. मु लिखितली ऑन दिवाली, ऑन होली. एगुड़ाक वर्ष को थरे थरे आसे. एगुड़ाक स्पेसिफिक डेज गुड़ाक. आई सॉ हर ऑन March 15, 2005 or 15th March, on Thursday, on a Sunday morning, on a winter evening, on a fine morning, on her birthday. Yes, on her birthday. जन्मदिन टा जहाँ भी पालन हुए 24 घंटा पाए. On the occasion of her 20th birthday, on the New Year's Day, on Christmas evening, on the Republic Day, साधारणतंत्र दिवस, on the evening of 15th August, on that day. तेणु स्पेसिफिक डे रे ऑन ये कथाटा को आउ घसीबार किसी ना. बाय देख पिले आम ऑलरेडी किछिटा ट्रांसलेशन आम फंडामेंटल क्लास रे करथिले. बायटा को आम सिटी यूज कर सारीचे. बायर माने हला सुद्धा, काली सुद्धा, दिन 3टा सुद्धा, राति सुद्धा, माने सेही अति बेसी रे सेही समय भितर से आम यूज करू बाय. तेणु बायर माने हला जहाँ कहू कौन ना सुद्धा ना, माने यही समय सीमा भितर आम कहू एति सुद्धा, यही समय सीमा भितर. केमिति? इट इज यूज टू शो. देखो इंग्लिश रे से कथाटा लिखला. इट इज यूज टू शो द लाटेस्ट टाइम एट व्हिच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड. इट इज यूजुअली यूज्ड विथ द फ्यूचर टाइम. 100% आम भविष्य आड़ को चिंता करी कहूना एतिकी सुद्धा ये कामटा करदब, यहाँ होजीव. तेणु यहाँ फ्यूचर टाइम ही आम यूज करूँ. द शो विल प्रोबेबली बी ओवर बाय 8 o'clock. 8टा सुद्धा हुए तो शोटा सरी जीव. एप्लिकेशंस मस्ट रीच द ऑफिस बाय 20th June. एप्लिकेशन गुड़ा दरखास्त गुड़ाक 20 जून सुद्धा व्हाट मस्ट रीच पहुँची जीवा दरकार. तेणु बायर मान है सुद्धा. एथिरे आउ कौन सी भेराइटी बा कॉम्प्लेक्सिटी नाही. नेक्स्ट इज फॉर
Okay, page number 48, the last preposition, that is for. तो एटा बेसिक क्लास रे कहि सारी पिले फॉर रो माने हैला धरी बा हैला, सिंस रो माने हैला रु बा ठारू, अति सरल भाषा रे. इट इज यूज्ड विथ अ पीरियड ऑफ टाइम ना, 2 दिन धरी 4 घंटा हैला, 3 नानो सेकंड पाई भी हो पछे, माइक्रो सेकंड पाई हो पछे, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हेन आई से ही हैज लिव्ड हियर फॉर 1 ईयर, ही हैज लिव्ड हियर 1 ईयर, वर्षे हैला सी एठी वास करूछि. For the last year, for the last 3 years, it rained for 3 hours. 3 घंटा धरी वर्षा हैला. So this is for. देखो for पर दे देछि since, for पर दे देछि since, सही एका कथा, since टाको बहुत थर कहि साइलेनी, तेणु आउ कहू नाही. So students, welcome to the class. So in the last few classes, we studied exactly the prepositions of place and the prepositions of time. So presently you are learning so prepositions of time like at, in, on, for, since, by, from, to, till, until, between, during, under and before. So since रो कथा मु बेसिक क्लास रे कहि सारी छी. since रो माने जेहेतु बहुत सेंटेंस रा में लिखू, since he is my father I can't blame him. since रो माने एकदम शुद्ध ओडिया रे होची ठारू, 3टा बेलू 4टा बेलू पर दिन ठारू ए भली भाबरा में लिखि परिबा. और since is used for the point of time, not period of time, whereas for is used for the period of time. ए since रो आउ गोटा चमत्कार यूज पिले जदि तुमे भाबिबो केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे यूज होउची, लाइक आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 3 o'clock, सेटा तो ठीक अछि. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेथिरे तो आमे यूज करूचे ही करूचे. ताले नुआ कथा कौन, नुआ कथाटा हला जे प्रेजेंट परफेक्ट सांगे मध्य यूज करूचे. आ देखो तुम बहिरे गोटे एग्जांपल देछि. प्रेजेंट परफेक्ट केमिति यूज करबा सिंस टाकू ना, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट and the result of which still continues. देखो सही कथा लिखी जी. It is used with a point of time in the past from which some action began and continues until the time of speaking. ए पर्यंत से कामटा चालू अच्छी. सो गोटे प्रेजेंट परफेक्ट गोटे सेंटेंस देखो लिखला I have lived here since 2000. So I have lived here. No doubt this is V3 my dear students. I have lived here since 2000. Very clearly देखो बहिरे लिखि देछि, that means have been living. मु सेठारे I have lived here, मु एठारे बास करिछि. बास करिछि माने कोन, एबे बी करूछि. So I have lived here since 2000. तेणु बहुत समय रे since को यूज करिकरी हमकु प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे सजाइबा दरकार नै, प्रेजेंट परफेक्ट रे भी तार माने से सैया बुझाई दउछि. सो एई तीनटा पॉइंट पई हमें since को यूज करबा. तो देखो लिखि देछि since last January, since January 2000, since 15th 2000, 15th January 2000, since childhood, since last year, since I was born. तो ए जगह गुड़ा करे हमें since रो यूज करिबा. So now एबे देखो from, to, till and until ए तीनटा जाक को गोटाए ग्रुप रे काहे रखा जाइछि, किछ तो रीजन थिबो. से डायरेक्टली एग्जांपल देछि पिले, एथिरा आ बेसी किछि इंटरप्रिटेशन करिवार नाही. सेति पई डायरेक्टली देखो एग्जांपल सेंटेंस कोन देछि. द रोड विल बी क्लोज फ्रॉम मंडे इवनिंग टू, द रोड विल बी क्लोज फ्रॉम मंडे इवनिंग टू, मंडे इवनिंग रु सोमवार इवनिंग रु टू till or until Monday morning, till or until Monday morning. And without using from we can use till or until. The book fair continued till or until Friday. So एइठी पिले गोटे कथा सबले मन रख, वर्तमान कथाटा होची आमे till कोठी यूज करिबा आउ until कोठी यूज करिबा. Remember till is used for specific time, माने गोटे समय पर्यंत. It is used for time, it is used for time. And until till रो माने पर्यंत, until रो माने भी पर्यंत. किंतु मु कोन कहबी तीनटा पर्यंत अपेक्षा करो, किंतु रोसई नहबा पर्यंत अपेक्षा करो. सो वेरी क्लियरली एटा समय पई व्यवहार करा जाए, एटा एक्शन पई यूज करा जाए, फॉर एक्शन, फॉर
action. गोटे एग्जांपल कहबी wait here till 3 pm. wait here till 3 pm. दिन 3टा पर्यंत अपेक्षा कर. किंतु until जदि यूज करबा कोन लिखिबा ना wait here until the train comes. until the train, so no doubt eta gote time phrase कोटा until the train comes. okay, very clearly. आउ बहुत जगह रे till आउ until को मध्य हमें यूज करि परिबा सेम सिचुएशन पाई. देखो जमति कि लिखि देछि ना द बुक फेयर कंटिन्यूड till or until Friday. माने till लिखिले भी ओके, until लिखिले भी ओके. Now between माने हला भितरे. like you can see the doctor between 8 am to 12 noon. very clear. एथिरा कोनोसी वेराइटीज नाही. between माने भितरे 3टा रु 4टा भितरे बस ए गोटिए यूज. now during, तेणु ड्यूरिंग रो कौन होची ना सही समय भितरे. जदि ड्यूरिंग रो एकदम आक्षरिक ओडिया अर्थ देखिबा ड्यूरिंग माने सही समय भितरे. देखो ड्यूरिंग कौन कहला इट इज विथ एन एक्शन दैट टुक प्लेस और इज टू टेक प्लेस. एग्जांपल देखो द फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट. द फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट. राति रे अग्नि विस्फोरण घटिला बा रात्रि समय मध्य रे बा रात्रि जो 6 घंटा कि 7 घंटा सही समय मध्य रे. तेणु एटा गोटे सेंटेंस. आउ गोटे देखो ही वाज absent फ्रॉम होम ड्यूरिंग द वैकेशन. छुट्टी समय रे. तेणु एथिरे मध्य आउ अबुझा जिनस किछि नाही. गोटे निर्दिष्ट गोटे समय भितरे गोटे काल रात्रि काल रे अग्नि विस्फोरण घटिला छुट्टी समय रे से absent थिला. तेणु एथिरे कोनोसी भेराइटीज नाही. आमको सब बेले सही जिनस गुडा टेंशन हुए जो थे भेराइटीज थाए. तापर देखिबा सम फ्रेजेस इंडिकेटिंग टाइम. समय को किछि फ्रेज इंडिकेट करते. कौन देख ऑन टाइम इन टाइम. यहाँ परहाप्स मु तुमको आगुरी मध्य कहिछि. देख ऑन टाइम आउ इन टाइम. ऑन टाइम आउ गोटे हला कोन इन टाइम. तेणु ऑन टाइम कौन स्पेसिफिक टाइम कहगला 4टा बेले आस 3टा 20 बेले आस कि 4टा 59 बेले आस सेटा हला ऑन टाइम. जो समय को आम स्पेसिफाई करदे तुम ये कमटा एतिकी बेले करिवो. आउ इन टाइम कौन ना इन टाइम देख कहला कौन इन टाकू देख गुड अर्थ रे नहीं. इन टाइम इट मीन्स अर्लियर दैन. ये देख ऑन टाइम रो गोटे सेंटेंस फास्ट कहि दउची द मैजिक शो स्टार्टेड ऑन टाइम. मैजिक शोटा जो समय आरंभ हवा कथा से समय आरंभ है. यार गोटे सेंटेंस देख द मैजिक शो स्टार्टेड ऑन टाइम. द मैजिक शो स्टार्टेड ऑन टाइम. तामाने जो समयटा कुहा जाइथिला से समय आरंभ होला. किंतु इन टाइम रो माने कोन होला इट मीन्स अर्लियर दैन. निर्धारित समय पूर्वरु जदि घटना घटला. कोन he reached the airport in time to see his friend off. देखो गोटे सेंटेंस he reached the airport in time to see his friend off. in time to see his friend off. ओके प्ले सी ऑफ रो माने होची विदाय कालीन देखा. ट्रेन रे प्लेन रे बस रे के यात्रा करूछंती आमे तांको गोटे विदाय कालीन शेष देखा भी कहि परिबानी. बस विदाय कालीन देखा ए जगह रो से जगह को जने जाउची तांको गोटे शेष देखा आमे करू सेटा कोनते सी ऑफ. एटा गोटे फ्रेजल वर्बटा एबे जोटा कि भांगी हे जाईची. देखो सी मझिरे ता सांग को तापर अछि ऑफ. तेणु बोले मुझे आगुरी भी तुमको कही एम्बिग्यूटीज रे इन टाइम रो माने होची निर्धारित जो भी समय सीमा अच्छी एकदम तार डेड एंड एकदम तार डेड एंड. ता पूर्वरु हुए तो ता परे आउ किछि खराब हो जाई थांता. गोटे एग्जांपल देखो ही रीच द एयरपोर्ट इन टाइम टू सी हिज फ्रेंड ऑफ. अच्छा प्लेन केते बेले टेक ऑफ करिवो से टाइम भी फिक्स.
जदि आउ टिके विलंब करिथांता गोटे सेकेंड विलंब करदेले भी से ता सांग को देखि पारि न थांता। मु तुमको फंडामेंटल क्लास रे भी गोटे सेंटेंस देथिली, द एम्बुलेंस रीच्ड इन टाइम सो द पेशेंट डिडंट डाई। एम्बुलेंस टा इन टाइम रे पहुंचला ता माने आउ टिके विलंब होइथिले किछि गोटे अमंगल जिनिस घटी थांता, एइटा हला इन टाइम। समथिंग अनस्पिशियस माइट हैपन, हुए तो किसी अमंगल जिनस घटी था। ए सेंटेंस देखुन, द ही रीच द एयरपोर्ट इन टाइम टू सी हिज फ्रेंड ऑफ। ठीक टाइम रे से पहुंची, आउ टिके लेट होते हुए तो फ्लाइट टेक ऑफ कर दे था, आउ को सांग से देखि पारि था। ओके, तेणु इन टाइम आउ ऑन टाइम। आउ गोटे देख सेंटेंस देछि इन टाइम रो, ही अराइव्ड इन टाइम टू अटेंड द मीटिंग। तापर देखो आउ गोटे लिखि देछि, prepositions on in are not used with some adverbials like next morning। हाँ पहले देखो, I visited him, for example गोटे सेंटेंस कहूची, I visited him last week, I visited him last week। एठी जदि आमे लिखिबा in last week सेटा भूल हो जिवो। तो यही सबू शब्द गुड़ाक तुम बही रे नाही, जो गुड़ाक पूर्वरु बा परे कोनोसी प्रेपोजिशन बसे नाही, सेही थ्रू गोटे होउची कोन लास्ट वीक। तेणु देख, प्रेपोजिशंस ऑन इन आर नॉट यूज्ड विथ सम एडवर्बियल्स लाइक कौन कौन दे देछि देखो लिस्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी वीक। आमे कस्मिन काले भी यही सब शब्द गुड़ाक पूर्वरु ऑन की इन बसौना। आमे कौन कहू, ऑन टुडे आई गॉट अ न्यूज, टुडे आई गॉट अ न्यूज। ओके, तो तुमको मन रखा पड़ो यही शब्द गुड़ाक सहित केबे भी ऑन बा इन ता पूर्वरु बसैबो नाही। एग्जांपल देखो, ही विल विजिट हिज अंकल्स हाउस नेक्स्ट फ्राइडे, but we can say he will visit his uncle's house on Friday next। okay, then he saw his friend last Monday, बा एमती कहि परिबा he saw his friend on Monday last। देखो दी प्रकार ऑन जदि तुम्हें लगेइबो ताले केमिति लगेइबो ना एमिति लगेइ परिबो, he saw his friend last Monday, लास्ट मंडे गला सोमवार एमिति कहि परिबा। बा जदि गोटे प्रेपोजिशन सेठी लगेइबा ताले कहि परिबा ही सॉ हिज फ्रेंड ऑन मंडे लास्ट। सेमिति आउ दुटा एग्जांपल देछि, ही वेंट टू कानपुर लास्ट मंथ, नॉट इन लास्ट मंथ, सेठी ऑन लगेइ परिबा, सॉरी इन लगेइ परिबा नाही। और ही केम हियर दिस मॉर्निंग माने कोन, आज सकाळ, मो आगुर कहि सारिछि, आज सकाळ को केबे भी टुडे मॉर्निंग बोली लिखिबोनी, व्हिच इज रॉन्ग। ओके, दिस मॉर्निंग, सो ही केम हियर दिस मॉर्निंग। तो प्रथमे आमे कोन कले, किछि प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस पढ़ी देले, एक्टिविटी 1 करथिले, एबे किछि प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम डिस्कशन कले, बस ता ऊपर बेस करिगिरी वर्तमान किछि क्वेश्चंस अच्छी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस हमको पुट करने को पड़ो। सो एक्टिविटी 2, सो स्टूडेंट्स यू जस्ट मार्क ईच एंड एवरी सेंटेंस, आई विल टेल यू द आंसर एंड यू जस्ट डिसाइड दैट व्हिच प्रेपोजिशन शुड बी प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देखो फर्स्ट, द मीटिंग स्टार्टेड डैश 10 o'clock, समय दे देछि 10टा, तेणु 100% कहबी 10टा रे, ओडिया रे आमे जाको कहू 10टा रे माने 8 10 o'clock। The house should be finished, the house should be finished dash next month, आरो मास, पिले आरो मास कथा कुहा होची माने गोटा निर्दिष्ट दिन कथा कुहा जाउनी, आरो मास ताने कोन, आरो मास सुद्धा ही जिबा दरकार, तेणु by next month। then 3 नंबर देखो, he has been sick dash the day he arrived, से जो दिन पहुंचिला सेही दिन ठू से कोन अछि, असुस्थ अछि, तेणु he has been sick since the day he arrived। 4 नंबर, he came here dash a winter evening, he came here dash a winter evening। okay, so he came here in a winter evening, गोटे winter संध्यारे से आसीथिला। he has been ill dash the last month,
he has been ill since the last month. देखो पे से सेम क्वेश्चन टा दिथर दे देछि तम बही रे प्रिंट हेछि ओके he has been ill dash the last month and he has been ill dash the last month. Then the train never arrives, the train never arrives कोन हबो on time आमे कहूना से ठीक टाइम रे केबे आसेनी ठीक टाइम माने कोन निर्दिष्ट टाइम रे से केबे आसे नाही so the train never arrives on time. The second world war ended, the second world war ended गोटे मसिया देछि तेणु मसिया सहित आम कौन बसेबा इन बसेबा सो इन 1945 we leave for France dash Friday so we leave for France on Friday ओके जेकोसी दिन आगु कही जेकोसी दिन बा 24 घंटार कथा जदि उठिला सेटा हला कोन ऑन सेठी ऑन फ्राइडे ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे ऑन वेडनेसडे एटसेट्रा. We are having a party dash New Year नुआ वर्ष को आम गोटे पार्टी करुछु तेणु जो नुआ वर्ष सी भी जनवरी 1 गोटे दिन रे पालन करा जाए सो वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन न्यू ईयर जनवरी 1 टा को आम नुआ वर्ष हिसाब रे पालन करू. द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश डिसेंबर बाय डिसेंबर डिसेंबर सुधा कामटी सरी जिबा दरकार सो बाय डिसेंबर. He started his journey dash daybreak okay so he started his journey at daybreak. Now एबे देखो prepositions indicating means of travel okay तेणु आम एपर्यंत कौन देखिले पिले prepositions of time देखिथिले prepositions of place देखिथिले एबे देखिबा prepositions indicating means of travel. He goes to college daily by bus, by car, by train, by taxi, by cycle, rickshaw. We can say by air, by aeroplane, by sea, by ship, by water, by boat, by road, by land. But if an article a or the is used before means of travel, the preposition on or in is usually used. देखो बिले कौन कहला मीन्स ऑफ ट्रैवल यातायात करिवार जेकोसी माध्यम यातायात करिवार जेकोसी माध्यम कौन सी गोटे वेहिकल हो लाइक ट्रेन हो टैक्सी हो रिक्शा हो बस हो कार हो आम सेठी बाय यूज करिबा ए धाड़िए रे कथा सइला. इवन को जल पथरे जिबा कि स्थल पथरे जिबा कि आकाश पथरे जिबा तेणु से लिखिपर बाय एयर बाय एरोप्लेन बाय सी बाय शिप बाय वाटर जल पथरे यात्रा करिबा कि डंगारे जिबा बाय बोट सेठी बाय मध्य यूज करिबा से कहूची. बट इफ एन आर्टिकल ए आउ द इज यूज्ड बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रैवल ताहले जदि ए किंबा द आमे यूज करिबा द प्रेपोजिशन ऑन और इन इज यूजुअली यूज तबे ऑन किंबा इन व्यवहार करा जीवो. देखो he went to college on his bicycle, on the bus, on a train, on the rickshaw, on the motorbike, on the horseback, on foot. Okay, he went to London okay on the or a plane, on a ship, but for car and boat in is generally used. Preposition on or in is generally used. देखो he went to college okay on his bicycle okay on his bicycle or on the bus okay or on a bus, on the train, on the rickshaw, on the motorbike, on the horse bike, etc. He went to London. देखो गोटे सेंटेंस लिखुची he went to London okay on the plane on the or on a plane आमे लिखि परिबा
ओके ही वेंट टू लंडन ऑन द प्लेन और ऑन ए प्लेन आम एठी लिखि परिबा ओके और ऑन अ शिप और ऑन अ शिप आम लिखि परिबा कोन ना ही वेंट टू लंडन ओके ऑन अ शिप से तो सही कथाटी कही ना कौन कहला ए आउ द एटा हला कौन इंडेफिनाइट आर्टिकल दटा हला डेफिनाइट आर्टिकल तेणु आमे जदि आकु यूज करिबा ताला में प्रीपोजिशन और इन को आमे यूज करिबा किंतु कौन कहूची बट कार एंड बोट इन दिस बट कार एंड बोट बट फॉर कार एंड बोट इन इज जनरली यूज्ड कौन होची पिले कथाटा बुझ कार हैला कि बोट हैला कारटा गोटे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जार गोटे छात अच्छी कार रे जीव माने कौन जड़े कार भितर बसिकी जीव ना आम कौन कहू अरे कौटी मुझे कार भितर अच्छी तेणु से आम कौन लगेले इन लगेले किंबा गोटे बोट देखा बोट माने कौन डंगा अच्छा बोटा कौन गोटे 2 डायमेंशनल सरफेस की नो इट्स अ 3D स्ट्रक्चर गोटे बोट देख एटा भी गोटे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तेणु या आम कौन करवा इन यूज करवा तेणु सीधा कथा से कहला कार आउ बोट पाई आम इन यूज करवा ओके सो इन इज यूज्ड फॉर कार एंड बोट ओके लाइक ही वेंट टू भुवनेश्वर इन अ कार देन तापर भी देख मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन तो देख प्रीपोजिशन रो यूज केते मात्रा रे अच्छी बहुत जगह गोटे सेंटेंस रे निहाती भाव नो obviously from the 9 parts of speech preposition is one of those so modes of communication he sent the message by post मुझे पहले लिखी दूची तुम भी थरे विजुअलाइज करो ताकू he sent the message by post तेणु बाई को आम कौन करवा ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन पाई आम बाईटा को यूज करवा देख बाई पोस्ट है बाई केबल कम्युनिकेशन होची ना केबल द्वारा बाई टेलीग्राम देन बाई टेलीफोन इवन बाई हैंड by letter by radio by email और by mail तेणु पिले मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पाई बाई व्यवहार करवा सरीगला कथा कौन सी जगह कम्युनिकेशन रो माध्यमटा जहाँ तापाई आम बाई यूज करवा लाइक हियर इज ए एग्जांपल He talked to his friend by telephone. But we say he talked about this on over the telephone. He talked about this on or over the telephone. देखो गोटे बढ़िया कथाटे आम कौन कहले ये मार्क करो he talked to his friend by telephone. He प्लीज सेंटेंस को टिके मार्क करो he talked to his friend by telephone किंतु आमे कौन कहू ना he talked about this on or over the telephone which is correct ओके तो देखो डिफरेंट सिचुएशन रे आम डिफरेंट प्रपोजिशंस फॉलो करूँ ये आउरी गोटे कथा देख ही इज वाचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन आम कहू से टीवी रे देखिला इन टीवी नुह पिले टेलीविजन मु आउ थरे कहूची कौन सी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन सी सरफेस टीवी रो स्क्रीन भी गोटे परदा गोटे 2 डायमेंशनल जार दैर्घ्य और प्रस्थ अच्छी किंतु उच्चता ना तेणु कौन से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिते आसला आम से कौन करवा ऑन यूज करवा तेणु देख लिखाई ऑन टेलीविजन वी हर्ड एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन द रेडियो सेमती
on the radio. Okay. Now mode of payment, टंका पैसा कारबार रो मोड ऑफ पेमेंट आदान प्रदान कौन ना ही पेड द बिल बाय चेक बाय क्रेडिट एंड इन कैश. तो देख तुमको ये गोटे कथा मन रखार अच्छे मोड ऑफ पेमेंट ये तीन टा तो अच्छी कौन बाय चेक बाय क्रेडिट बट इन कैश. तो आम लिखा बाय चेक और आम लिखिपर बाय क्रेडिट आ लिखा इन कैश. तेणु केबे कहबनी बाय कैश कहब इन कैश. सो दिस वाज द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. वर्तमान देख प्रेपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ही रोट द लेटर विथ अ पेन. ही रोट द लेटर विथ अ पेन और विथ अ पेंसिल. कौन सी इंस्ट्रूमेंट पाई आमे कौन यूज करिबा ना विथ यूज करिबा. किंतु मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पाई आमे बाय यूज करूथिले. ओके लाइक विथ अ पेन. ही रोट द लेटर विथ अ पेन. पेन साहाय्य पेन गोटे कौन गोटे गोटे लेखनकारी उपकरण बा लिखिबा पई गोटे उपकरण. विथ अ नाइफ छुरी द्वारा काटिली विथ अ नाइफ विथ अ पेन with a knife. Okay. Even body parts पाई मध्य आमे with लगेबा. Body parts पाई मध्य with लगेबा. We see with our eyes. केबे कहबानी by our eyes. So we see with our eyes. आमे आम आखि द्वारा देखू. He is walking with a stick. He is walking with a stick. गोटे बाड़ी द्वारा बा गोटे बाड़ी साहाय्य से चली. He took something with both hands. He took something with both hands. बॉडी पार्ट्स कथा आसला जोठी आमे सेठी कोन यूज कले with यूज कले निज उभय हाथ द्वारा से किछि जिंस नेला. But we say the letter was written in ink or in pencil. But in ink or in pencil. The picture was printed in oils. The picture was printed in oils. एई दिटा कथा हमको मन रखिबाकू पड़िबो. Okay. Now, prepositions of agency, means or instrumentality. Okay. Prepositions of agency, means or instrumentality. कौन देखो? The temple was designed by Rabi. बहुत समय तुम गोटे आर तले लेखा देखियो लिखाई बाय महेश बाय भूपेश एमती नाटा लिखाई थाए. सो द टेम्पल वाज डिजाइंड बाय रवि. ही मेक्स अ लिविंग बाय टीचिंग. से शिक्षा दान करी पाठ पढ़ी बंचे. ओके सो यहाँ गोटे मीन्स गोटे माध्यम गोटे जरिया बंचीबार. सो ही मेक्स अ लिविंग बाय टीचिंग. He was killed by lightning. He was killed by lightning. वज्रपात बा बिजुलीपात हवा द्वारा से मरी जाइथिला. So this is instrumentality. एठी मध्य आमे by यूज कले. The man was killed by a falling chimney. The man was killed by a falling chimney. खसी पड़ुथवा चिमनी ता ऊपर पड़िबा द्वारा से मरी गला. तेणु हम कोन लिखिले जे by a falling chimney. ओके सो पिला में कौन देखिले ना prepositions of place, prepositions of time, prepositions of indicating means of travel, modes of communication, mode of payment, prepositions of instrument and prepositions of agency, means and instrumentality. He went to America dash an aeroplane. गोटे एरोप्लेन रे गला. सो दिस इज ऑन एन एरोप्लेन. ही वेंट टू हावड़ा dash on Coromandel Express. So he went to Howrah, okay, on the Coromandel Express. He sent the books dash registered parcel. तेणु ये कौन ना मोड ऑफ कम्युनिकेशन. पार्सल द्वारा हो चिठी द्वारा हो these are the modes of communication. So he spent the books by registered parcel.
He dug the pit dash a shovel. Okay, he dug the pit with a shovel. कौन सी प्रकार उपकरण नहीं कौन सी प्रकार उपकरण कथा आसिला एठी with a shovel. He talked to his friends dash on the telephone. He talked to his friends, sorry, not friends, friend. He talked to his friend dash the telephone. Okay, dash the telephone. कौन सी देखो ये आम टिके आगु पढ़ले ना कौन सी प्रकार कौन बाय टेलीफोन है ना कौन सी प्रकार मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्लियरली लिखी देछि ना बाय पोस्ट बाय केबल बाय टेलीग्राम देख पेज नंबर 51 4.2 बाय टेलीफोन तेणु एथरे किछि भाबिबाकू पड़ेनी थुआ हेछि आखि सामना रे नहीं बाय हैंड बाय लेटर बाय रेडियो बाय ईमेल और बाय ईमेल सो बाय टेलीफोन. He paid his dues dash in cash. ये टिकिया को लिखी थी ना पिले you know by credit by check but in cash. So he paid his dues in cash. Then activity 3 bit number 7. If you haven't got any cash on you, you can pay dash check. तेणु by check. The answer was written dash of pencil. एटी मध्य थुआ है इन ए पेंसिल. ओके कौन लिखला इन इंक आउ इन पेंसिल. ओके ये दुटा आम इन यूज करवा. सो दिस वाज वेरी इजी. देन द आंसर वाज रिटेन. द आंसर वाज रिटेन डैश पेंसिल. द आंसर वाज रिटेन बाय पेंसिल. वेट 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 पिले माने पेंसिल टाको नेकी दिथर लिखी देख कहला डैश अ पेंसिल डैश अ पेंसिल ये भी पेंसिल द्वारा 9 नंबर बिटा देख लिखी द आंसर वाज रिटेन डैश पेंसिल. डैश पेंसिल एटा भारी इंटरेस्टिंग कथाटा एग्जाम रे आसीबा पॉइंट ऑफ व्यू रो अछि. एठी गोटे कथा देख आमे देखिले जे पेज नंबर 50. ओके prepositions indicating means of travel. ओके सो ये गोटे जिनस देख ये लिखाई से क्लीयरली लिखीदेला देख द लेटर वाज रिटन इन इंक और इन पेंसिल. अच्छा इन पेंसिल कौटी हम जो कौन सी आर्टिकल यूज हेनी मु गोटे जिनस कन्फर्म हो गली ये ए नामक आर्टिकलटा यूज होती तेणु एठी इन लगे इन पेंसिल कारण एठी कौन सी आर्टिकल सी आउ देई नाही. ओके इन पेंसिल किंतु एटा देख द आंसर वाज रिटेन. द आंसर वाज रिटेन ओके बाय अ पेंसिल. ओके बाय अ पेंसिल और विथ अ पेंसिल. सॉरी दिस विल बी विथ अ पेंसिल. ए सेंटेंस भी तुम बही रे देछि देख 4.3 ही रोड द लेटर विथ अ पेन और विथ अ पेंसिल. ओके गोटे इंस्ट्रूमेंट हिसाब से जिते धरू ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ विथ अ पेन विथ अ पेंसिल. सो विथ अ पेंसिल एटा को इंस्ट्रूमेंट हिसाब से चले निगला विथ अ पेंसिल. गोटे धाड़ी रे कहूँ जदि आर्टिकलटे यूज करिचे ता पूर्वर विथ लगेले अदरवाइज जदि एठी कौन सी आर्टिकल आम यूज न करिबा ताहले पेंसिल पूर्वर इन यूज करिबा. लाइक इन इंक इन पेंसिल देखो ना काली रे लिखा है लिखला इन इंक और इन पेंसिल. वेरी क्लियर. सो एबे देखो बोले idiomatic uses of prepositions किछि रूढ़िगत आमर अच्छी ना idioms बा किछि रूढ़ी थाए ओडिया रे कोन सब भाषा रे अछि किछि रूढ़ी. ओके से रूढ़िगत किछि prepositions देछि at play at work at heart at breakfast or lunch at dinner. ओके पाखापाखि देख आम ये देखा 40-45 खंडे कौन देछि idiomatic uses of the prepositions देछि. तेणु देख सबुथिरे आट लगी कौन बाय लगी कौन इन लगी एक्जाक्टली 3टा कलम तो देछि कौन सब 10-12टा खंडे आट लगिकी
सेठू बाय लगी बाय लगिक सेम 10 12टा खंडे आ इन लगिक 10 12टा खंडे देछि तापर देख ऑन फायर ऑन हॉलिडे ऑन फुट ऑन सेल ऑन पर्पज on the average or on an average on duty off duty on no account under control under again another preposition you know under below beneath we have already discussed within hearing within reach on a journey on one's way on second thoughts ei type ro सब जाक idiomatic uses देछि ओके सो एबे देखो ए idiomatic uses of preposition ऊपर बेस करी करी immediately आउ गोटे activity 4 supply appropriate prepositions in the following blanks okay his decision took me dash at dash surprise he is very dash hurt Rabi has been dash holiday for the last 2 weeks the house is dash sale there were 100 people there dash all I was able to know dash sight he acted dash wants to save the boy's life when I arrived this house he was dash lunch he is dash a visit to Delhi so एठी बस खाली जानिबार अच्छी जे ओडिया रे ए सेंटेंसटा कोन बारंबार से गोटे कथा कहूछि गोटे सेंटेंसटा को ओडिया रे प्रथमे ट्रांसलेशन करो सेठी जानि परिबो द्वारा ना रे ना कोन आमे सेठी कोन प्रीपोजिशन टा लगेबा ओके सो तबे एटा निजे चिंता करो तथापि यू नो मु आंसर टा कहूछि हिज डिसीजन टुक मी बाय सरप्राइज ही इज वेरी काइंड एट हार्ट हृदय बा आमे कहते नहीं दिल से अच्छा एट हार्ट रवि हैज बीन डैश हॉलिडे रवि हैज बीन ऑन हॉलिडे छुट्टी रे अच्छी दिस हाउस इज फॉर सेल ए घरटा बिक्री करा जीवो बा दिस इज फॉर सेल देयर वर 100 पीपल देयर वर 100 पीपल देयर इन ऑल ओके देयर इन ऑल I was able to know at sight. I was able to know at sight. He acted dash once to save the boy's life. Okay. He acted at once. At once. When I arrived in his house, he was at lunch. When I arrived in his house, मुझे तबे ता घरे पहुँचली सो ही वाज एट लंच से खाइबार थिला बा खाइबार व्यस्त थिला सी ही वाज एट लंच ही इज डैश अ विजिट टू दिल्ली ही इज ऑन अ विजिट परिदर्शन रे से आमे कहूना एकदा से परिदर्शन रे आसीथिले सो ही इज ऑन अ विजिट टू दिल्ली तापर पिले देखो से पेज नंबर 53 रो लिखला सम verbs आर फॉलोड बाय डेफिनाइट prepositions किछि डेफिनाइट prepositions ए verb गुडा का परे हमरो किछि डेफिनाइट prepositions आसे if the prepositions can be changed the meaning of the sentence also changes here are some verbs followed by definite prepositions पिले एटी गोटे कथा मार्क करो कहला some verbs followed by definite prepositions some verbs followed by definite prepositions ए verb गुडा के परे definite prepositions आसे से कहला कोन if the prepositions can be changed ए preposition गुडा को जदी चेंज कर दिया जीवो ताले meaning of the sentence also changes okay देखो like inquire about remind about worry about inquire after protest against or warn against aim at ओके ए verb गुडा के पर देखो गोटे सेंटेंस कहला ना कोन ना protest against protest करिया माने कोन विरोध करिबा ओके protest against ओके
प्रतिवाद करवा प्रोटेस्ट है प्रतिवाद करवा ओके तेणु कौन है ना यही भर्ब गुड़ाक आमर गोटे डेफिनाइट प्रेपोजिशन सब बसे एम को जदि आम चेंज करदे ताले सेंटेंस रो मीनिंग मध्य चेंज हो जीवो तुम देख बहुत गुड़े देजी ओके तापरे यूज ऑफ सम प्रेपोजिशंस आर गिवन बिलो देख गोटे सेंटेंस inquire about he inquired about the advertisement in the newspaper he called me aside inquire after he called me aside to inquire after my daughter warn against he warned me against swimming in the sea से मत सचेतन करेला समुद्र रे न पहरिबा पई बा तार विरुद्ध रे समुद्र रे न पहरिबा विरुद्ध रे बा न पहरिबा पई से मत कोन करेला सतर्क करेला he warned me of danger die from complain of complain to complain about agree to agree with agree with ओके तो यही किछि किछि वर्ब्स अच्छी जहाँ पर आमर गोटे डेफिनाइट प्रेपोजिशंस बसे तो यही सब सेंटेंस गुड़ाक पढ़िले तुम जापर जे यार जस्टिफिकेशन टा केते देन एग्री ऑन रिमाइंड अबाउट रिमाइंड ऑफ मेड फ्रॉम द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड ए मुदीटा सोनारे तैयारी बा एटा सोनारे तैयारी मुदी सो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड made from butter is made from milk everyone knows flour is made from wheat compare with compare to so what is your task my dear students these are very useful and commonly used verbs followed by the prepositions like inquire about inquire after warn against warn of die from तो युवाक तुम पढ़ा दरकार बहुत यूजफुल सेंटेंसेस देची ये सब प्रपोजिशंस को लेकिन सो बर्तमान देख आम किसी पढ़ुले एक्टिविटी करुले एबे डायरेक्टली आसीगला एक्टिविटी 5 एक्टिविटी 6 एंड एक्टिविटी 7 ओके आफ्टर दैट दिस चैप्टर वुड बी कंक्लूडेड सो एक्टिविटी 5 वर्तमान देख insert appropriate prepositions in the following blank spaces preposition नो कथा ही चली so let us invite them all to dinner I hastened to assure him dash my support of my support he borrowed a pen from me mo tharu his failure has completely discouraged him from trying again आउ थरे चेष्टा करिबा पाई आउ ताकू ये बल दे पारुनी ताकू निरुत्साहित करि देछि से आउ थरे बिल्कुल चेष्टा करि परिबो नाही I like to induce dash a hot bath I like to induce in a hot bath we congratulate you dash becoming a father we congratulate you on becoming a father students should concentrate dash on studies so student should concentrate on studies everybody has been warned dash the danger everybody has been warned against the danger they reminded me dash the meeting they reminded me of the meeting देखो they reminded me of the meeting बाबद रे बा मीटिंग पाई से मते सतर्क करै देले सतर्क नो मने पकई देले so of the meeting then adjectives followed by definite prepositions okay adjectives followed by definite prepositions देखो देछि there are some adjectives which are followed by definite prepositions for example anxious or careful or careless or excited or sorry or worried plus about तेणु about यही सबू verbs गुड़ाक परे सॉरी यही सबू adjective गुड़ाक परे which are followed by definite prepositions
Then angry, delighted, good, bad, quick, shocked, surprised. ये सब गुड़ाक सहित at को लगे परिबा. Then shocked or surprised सहित by भी लगी परिबो. Eligible, fit, responsible, sorry, useful एमान सहित for लगी परिबो. Absent or different ता सहित from लगी परिबो. Then like blind or interested plus in, afraid, ashamed, aware, capable, careful, certain, confident, conscious, envious, fond, full, hopeful, innocent, jealous, proud, sure, tired, worthy plus of. माने देखो केते गुड़े एडजेक्टिव सहित आमे ऑफ को लगे परिबा. Then keen plus on, applicable, blind, familiar, faithful, grateful, harmful, indifferent, kind, known, identical, loyal, useful एमान सहित टू को लगे. बोले ये सब कथा गुड़ाक ना जहाँ सब कहूँ बर्तमान तुमको बा तुम बही रे जहाँ भी लिखाई एटा को केवल आउ केवल तुमको मन रखा पड़ो. एनो हायर क्लासेस रे हुए तो तुम आउ टे भितर को जापर तार आउ टे एक्यूरेसी सहित किंतु जो एडजेक्टिव सहित जो प्रेपोजिशन बा जो वर्ब सहित जो प्रेपोजिशन लगुच तुमको ये सब गुड़ाक मन रखा पड़ो. देन affectionate plus towards, angry, careful, delighted, disappointed, disgust, familiar, ill, pleased, satisfied plus with. आमे कहूँ ना मु तुम उपर रागी सो आई एम एंग्री विथ यू. आई एम एंग्री विथ यू केबे कहबनी ऊपर माने नु हम केबे कहबनी आई एम एंग्री ऑन यू. ऑन रो माने होची गोटे सरफेस आ कोन जनक ऊपर हम चढ़ी जीवा ना कोन. ओके आउरी भी सेंटेंस सुन तो मु तुम ऊपर बहुत प्रीत. आई एम प्लीज्ड विथ यू. तेणु देख ये जो प्रेपोजिशन भारी छोट छोट शब्द आरंभ कही ना नेटिव स्पीकर जो मानकर मातृभाषा हूँ इंग्लीश से जो संवेदनशील पाठरे बा चैप्टर रे डाउट थाए सेटा हूँ प्रेपोजिशंस. बड़ बड़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्य ए प्रेपोजिशंस उपरे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आसे. ओके तेणु आपको केबे लाइटली नबनी. टेक इट सीरियसली. Fill in the blanks with appropriate prepositions. Okay? देखो वर्तमान एक्टिविटी 6. Don't be impolite. Dash your elders. To your elders. You shouldn't be rude. Dash them. You shouldn't be rude to them. सेमानंक प्रति एते rude बा निष्ठुर बा कठोर मनोभाव पोषण करो नहीं. Some people are cruel. Dash animals. Some people are cruel to animals. Are you angry? Dash what happened. Are you angry at what happened? Jaha ghotila. The old man is very furious. The old man is very furious with me. Okay? देखो बिले is very furious with me. मो ऊपर अत्यंत मात्रा रे जने क्रोधान्वित. ओके एक्जाक्टली ए जिनस गुड़ाक देनी फ्यूरियस माने देखुन एक्स आई बीटा एंग्री, केयरफुल, डिलाइटेड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड असंतुष्ट है ना, डिसगस्ट, फैमिलियर, इल, प्लीज्ड, सैटिस्फाइड संतुष्ट हो बा क्रोधान्वित हो एगुड़ाक सहित कौन लगे विथ. सो द ओल्ड मैन इज वेरी फ्यूरियस विथ मी. तेणु तुम मैंने थरे थरे सबू प्रेपोजिशन रो करेक्ट यूज को कला परे आउ ताकू लेखिले ही तुम जापर जे यही जगार ए प्रेपोजिशन ही सुटेबल. यू नो द 6th बीट. ओके आई एम कंटेन्ड. आई एम कंटेन्ड व्हाट आई हैव. सो आई एम कंटेन्ड यू नो विथ व्हाट आई हैव. मो सहित बा मो पाखरे जहाँ भी अच्छी मुझे आत्मसंतुष्ट प्राप्त करुच्ची बा मु तृप्त. देन 7th आई एम टायर्ड डैश आर्गुइंग विथ यू. ओके आई एम टायर्ड ऑफ आर्गुइंग विथ यू. मु तुम सहित जुक्ति करी करी हालिया हो पड़े. सो आई एम टायर्ड ऑफ आर्गुइंग विथ यू. देन द 8th बीट
The diet here is deficient dash the vitamins. Okay. So I am tired dash arguing with you. So I am tired of. Okay. आमे बेले बेले कहू ना मु एई काम करी करी कि व्यस्त होई गलेनी है ना. सो आई एम टायर्ड ऑफ तुम सहित जुक्ति तर्क करी से क्वेश्चन टा सॉल्व करी. सो आई एम टायर्ड ऑफ आर्गुइंग विथ यू. The diet here is deficient in vitamins. एथिरे विटामिन रो अभाव रही in vitamins. I am very glad. I am very glad of seeing you. Okay, I am very glad of seeing you. You must be conscious. You must be conscious dash your speech and action. You must be conscious of your speech and action. Okay. तुम कथा एवं तुम काम प्रति तुम्हें सतर्क बा दायित्ववान हवा उचित. सो कॉन्शियस ऑफ योर स्पीच एंड एक्शन निज कामर एवं निज कथार तुम्हें जत्न रख बा ध्यान नियो. आई एम नाउ शॉर्ट डैश फंड्स. आई एम नाउ शॉर्ट ऑफ फंड्स पैसार अभाव बा फंडिंग रो अभाव. His income is sufficient dash his needs. His income is sufficient for his needs. तार आवश्यकता गुड़ाक तार इनकम यथेष्ट अटे. सो हिज इनकम इज सफिशिएंट फॉर हिज नीड्स. तापर देख लिखला नाउन्स फॉलोड बाय डेफिनाइट प्रपोजिशंस. सम नाउन्स आर यूजुअली फॉलोड बाय डेफिनाइट प्रपोजिशंस. फॉर एग्जांपल ओपिनियन और व्यू प्लस अबाउट. Resemblance plus between. Admiration, attraction, appetite, cause, cure, demand, dislike, love, pity, reason, remedy, room, sympathy plus for. Belief, difficulty, success in. Okay. आमे बेले बेले कहू ना मु से काम रे सफलता पाउची से काम रे मते असुविधा होउची से कथा रे मु विश्वास करे. सो बिलीफ डिफिकल्टी सक्सेस ए तीन टांग सहित आमे इन को जोड़िबा. एडवांटेज कॉज नॉलेज प्रूफ ता सहित कोन प्लस ऑफ लागे. आमे जानि ना ए जिंसर एडवांटेज कोन ए जिंस रो कहू एहा रो कारण कोन. ओके ए विषय रे मोर नॉलेज अच्छी तेणु आम कहू आई हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. देन प्रूफ ऑफ कौन अच्छी प्रमाण घटनार व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस सिचुएशन और प्रूफ ऑफ दिस प्रॉब्लम और प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट. देन इफेक्ट इन्फ्लुएंस ओपिनियन व्यू प्लस ऑन एगुड़ाक सागर ऑन लगेगा. देन एक्सेस अल्टरनेटिव कंसेंट resemblance solution plus 2. So can I get access to your system you know ek guda kar lage. Consent resemblance what is the solution to this problem. Then attitude or duty ta sath lage towards. Okay, so you have like you know this is your duty towards your parents. Then difficulty. Okay, डिफिकल्टी ता सहित विथ लगे पे टिके आगुरी देख फोर्थ बीटा लिखी ना बिलीफ डिफिकल्टी और सक्सेस ता सहित इन लगी पारुची प्लस डिफिकल्टी सहित विथ मध्य लगी पारुची. सो पे प्रेपोजिशन चैप्टर द लास्ट एक्टिविटी. सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस वन. चैप्टर 5 थिला योर प्रेपोजिशंस and activity 7 thila fill in the blank spaces with the appropriate prepositions. So activity 7 I have a good relationship. So एते गुडे पिले आमे prepositions ऊपर क्वेश्चन कलानी तेणु मु वर्तमान सीधा तुमको आंसर कहूची गोटे सेंटेंस रे fill in the blanks जगह कौन पुट हबो सेटा तुम निजे जानि परिबो. I have a good relationship with my neighbors. neighbor को सहित so with. There is a sharp fall dash demand for gold. There is a sharp fall in demand for gold. सुनार चाहिदा रे गोटे भारी कौन सुनार चाहिदा खसी आसिला है ना. There is no difference dash a steam engine and a oil engine. So there is no difference between when we compare between exactly two we use between.
So there is no difference between a steam engine and an oil engine. What is your reaction? What is your reaction to the news? To a खबर को बा ए खबर प्रति तमरो reaction कौन? His progress dash studies is very satisfactory. His progress in studies पाठ पढ़ारे तारो progress. They had a discussion. They had the discussion on the topic. से topic ऊपरे तेणु on the topic. His familiarity dash the place saved him from a lot of troubles. Okay, his familiarity with the place से जगह सहित तार संपर्क बा जो परिचितिटा कौन कला saved him from a lot of troubles अनेक गुड़िया असुविधार ताकू रक्षा कला. So his familiarity with the place. He has a great admiration. He has a great admiration with my talent. With my talent. मो प्रतिभा को नहीं बा मो प्रतिभा पाई तार admiration रहुची. So with my for my talent. He has a great admiration for my talent. मो प्रतिभा पाई. He is in agreement dash my views on this subject. He is in agreement with my views on this on the subjects. On these subjects. His performance made an impression on me. His performance made an impression on me. तार प्रदर्शन मो उपरे गोटे छाप छाड़िला. You know, his performance made an impression on me. तेणु पिले माने सही कथा को आउ थरे दोहराउची जे वाक्य को फील कले जाइकिरी सेथिरे को प्रेपोजिशन टा अप्लाई हबो से जिनसटा को बुझी हबो. कारण देख किछि प्रेपोजिशंस ए गोटे शब्द सहित अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज करा जाए. जेमति कि डिफिकल्टी विथ यूज करा जाए, डिफिकल्टी इन भी यूज करा जाए. ओके, तेणु ये सबू प्रेपोजिशन जदि तुम भल करने को चाहूच केवल आ केवल ऑब्जर्वेशन करने को पड़ो. गोटे सेंटेंस को गोटे सेंटेंस रे ए प्रेपोजिशन को कहीं व्यवहार करा जाइछि.